us India's literary genius, a best-selling author, a columnist, a journalist, a political analyst, a pillar of responsible reporting, an architect of change, an eminent Indian author who has ushered in a revolution of change and hope for India. It's not easy to tame a gale. It's not easy to harness the mighty ocean. And it's definitely not easy to summarize a lifetime of accomplishments and achievements of our guest, Rasheed Kidwai ji. He's a visiting fellow with the Observer Research Foundation. He's a regular on news channels like News 18, Times Now, ABP News, NDTV. The power and influence of his stories is so strong that it is relevant to the diverse populace of India as he tracks Indian government, political parties, community affairs, and also Hindi cinema. He journeys into the past to find pertinent answers to the future. The endeavor is to apprise the reader on the multi-hued political and cultural fabric of India, the amalgamation of yesterday and tomorrow. Rasheed ji is always brave enough to express his feelings without mincing his words. Reading his words, the way he writes, the way he sees the world, its colors, its textures, its sounds, makes the reader feel, emote, and dream similarly. That is the power of creativity, that is the power of his words, and that is the power of the phenomena who is among us today. I also welcome my very dear friend Ridhima Doshi, Ehsaas woman of Udaipur, to be in conversation with our guest today. On behalf of Prabha Khaitan Foundation, Ehsaas Women of Udaipur, and Hotel Radisson Blu, I now request the two skilled raconteurs to mesmerize us all with their words, with their wit, and with their wisdom. Welcome, Rasheed ji. Thank you, Swati, for the introduction. Rasheed ji एक ट्रू सेंस में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपना साहित्य किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति से जोड़कर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रूप से राजनीतिक विश्लेषण किया है। रशीद जी, आपने राजनीति पर कई किताबें लिखी हैं। हाउस ऑफ सिंधियास उसमें से एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जो सिंधिया फैमिली के 300 साल के राज्य को बताती है। अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स एंड पावर से देखें तो शायद ये गांधी फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल फैमिली मानी जा सकती है जिन्होंने एक भी साल के लिए अपना पोजीशन ऑफ पावर को नहीं छोड़ा। सो इस पॉलिटिकल पावर हाउस के बारे में हमें और कुछ बताइए। Thank you, Ridhima. Thank you. First of all, I would want to thank the Prabha Khaitan Foundation for inviting me here to be with you, and I was so overwhelmed by Swati ji's kind words. I don't know whether how much I deserve this, but thank you very much once again, and thank you everyone here for being with me. I hope it becomes a kind of memorable evening for you. Ridhima, you have asked a very valid question. Actually, when you think of politicians and those who are in power, the first name would strike many people would be of Nehru Gandhi family, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi. It looks like a kind of never-ending saga of power in politics. But when I wrote a book called The House of Scindia. This is a Hindi edition of the House of Scindias, as a political dynasty. It was set up way back in 17th century by Ranoji Scindia. And from that day till 1947, we got independence. So they were a ruling house. They were always the rulers. उसके बाद में वो क्या हुआ कि जब आज़ादी के बाद में जब ये वंदे भारत बना, उसका डिवीजन हुआ, तो वो जो शिवाजी महाराज जो थे, जॉर्ज सिंधिया कहलाते थे, he became राज्य प्रमुख, like a governor of the state. And then in 1957, Jawaharlal Nehru invited him, so he didn't go. He sent his wife, Rajmata Scindia, and she went to, and Nehru said, you have to fight election.
and she was a little reluctant, but she agreed and she fought election. So 1952, 1957, 1962 she fought election on कांग्रेस टिकट. 2 बार वो लोकसभा की सांसद रही, उसके बाद वो स्वतंत्र पार्टी, फिर भारतीय जनता संघ, फिर भाजपा में रही. तो उसको लेकर के फिर उनका बेटे 71 में माधव सिंधिया मिनिस्टर बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने लोकसभा के, और उसके बाद उनकी जो दोनों बेटियां हैं वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे. तो मैंने कैलकुलेट किया, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ आज़ाद हिंदुस्तान के उसमें कि जब कोई सिंधिया परिवार का सदस्य या तो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, मध्य प्रदेश की या राजस्थान की कोई ना रहा हो. तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग. आई थिंक नॉट यूनिक ओनली इन इंडिया, बट perhaps if you look around in the world, there have been monarchs who have had spent more time, and there are but monarchy plus democracy continuation is unique, and of course their life is very interesting. So I would request all of you, if you get a chance to read this Sindhya Gharana or in the English system house. So it's not written for or against them. It is I'm trying to be very objectively trying to analyze their life, and there are a lot of stories are there, including the kind of tussle, saas bahu struggle, and also a lot of drama. I think they are not very happy. They are kind to me. They all met me before and after, but they said that Jyotirindya told me that he is not in a position to endorse it, and I see his point of view. Thank you. Nice. So it's a nice transformation from being the kings, the rulers, to being public servants, and they managed it too. So Rasheed ji, आपने बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का जो मेल जोल है उस पे ये किताब लिखी है, नेता अभिनेता. So this book talks about Jaya Bachchan, Dilip Kumar, Hema Malini, their contribution to politics. So Rasheed जी ये बताइए कि 1970s, 90s में जो एक सॉफ्ट पावर था बॉलीवुड का, स्टार्स का, people they had a great fan following, people would give them votes. But this new generation, do you think with the new generation which is influenced by OTT platforms, do you think they will choose the leaders based on their popularity as movie stars? Yeah, I think that's a very interesting question. देखिए क्या है, maybe it's got to do with my grey hair or so. I feel that nostalgic of the past. Many of us get into it. The kind of command that Dilip Kumar, Raj Kapoor or Devanand had, and later on I saw emergence of Rajesh Khanna and Amitabh Bachchan as huge icons, and then later of course Shah Rukh Khan, Amir Khan, Salman Khan, they all had things. But I think today's world, as she's very rightly asked this question, is changing very fast. I think the post-COVID, it's just a year of 2 years or so, but we are not going and watching films, or films are not being able to grip us. What is the reason? It's because we got so much of data at our disposal. We have so much of access, not only just Netflix or everything, and YouTube, everything is available. So we are able to watch a lot of movies, not only movies of India and people of various generations. Like I see young children watching a lot of Korean movies. Now, I mean, at my time, probably one could think of Bruce Lee or somebody like that, and that also we had a very hazy idea of it. So access, a lot of lack of restriction, and you get a lot of choice. So I think somewhere our heroes are not that captivating heroes and heroines put together. So we are. I feel with a tinge of regret. I see that what we are seeing, the last of these Khans and Hrithik Roshan and all was just one phase. Nowadays you won't have a mega stars because people have very they have very varied interests. The film stars, what they did was there is also transformation. Like initially when the film stars showed interest towards politics, their interest was to have longevity in public life, and some of them were guided by very good thoughts also. जैसे मैंने इसमें किताब में किस्सा लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू रूस गए और रूस में उन्हें स्टालिन जो वहाँ का बहुत बड़ा लीडर थे और उसके डिक्टेटर भी थे, एक तरह के सुप्रीम लीडर थे, तो वो नेहरू से पूरे टाइम राज कपूर की बात करते रहे आवारा फिल्म की, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थी. नेहरू वापस आए और नेहरू ने पृथ्वीराज कपूर से जो उनके दोस्त थे
उनसे कहा कि ये तुम्हारे बेटे ने क्या काम किया, वहाँ सब आवारा आवारा कह रहे थे। तो नेहरू पे इस बात का मतलब आइडिया भी नहीं था कि राज कपूर इतने ज़्यादा पॉपुलर है। फिर नेहरू ने बहुत ज़्यादा फिल्म स्टार्स को एक तरीके से हमारे कंट्री की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए साउथ एशिया में, यूरोप में बहुत जगह, नॉर्थ अफ्रीका में बहुत जगह यूज़ किया कि उनको वो करा। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी थोड़ा स्वच्छ भारत के लिए उस तरह से फिल्म एक्टर्स को यूज़ किया, तो एक तरीके से दोनों ने वो करा। हमारे यहाँ देखिए बहुत एक मैं कुछ साल पहले अल्जीरिया गया था, 2 साल पहले। वहाँ हिंदुस्तान के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन ऐश्वर्या राय को सब जानते हैं। और उनकी शादी होती है तो 7 दिन कस्टम चलते हैं, 7 दिन हर दिन एक नया ड्रेस पहना जाता है। तो एक दिन वो इंडियन साड़ी, बनारसी साड़ी जाती है वहाँ पे। इसी तरीके से मैं मिस्र गया, इजिप्ट में, वहाँ पे मैंने देखा कि लोग इंडिया के बारे में इतना जानते, लेकिन अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ये धरोहर है जो रही है। अभी बहुत ज़्यादा उसका पोलराइजेशन हो गया है, उसको मैं बाद में बात करूँगा। रशीद जी, आपने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है कॉल्ड 24 अकबर रोड, which is of course it talks about legacy of Congress. Talking about Congress, इंदिरा गांधी जी के कुछ दिलचस्प किस्से बताइए जो कि उनकी पॉपुलर स्टर्न इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट है। इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ आपने बात बताई 24 अकबर रोड का। देखिए क्या ज़माना क्या था और हम कैसे बदल गए हैं, और उससे कोई ये चीज़ मेरा एक और आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इंसानी तौर पे और सामाजिक तौर पे कोई फ़र्क नहीं होता। जो हम कहते हैं कि बड़ी फैमिलीज हैं या बहुत, उनकी भी उसी तरीके के उनके घर में भी बड़ी सारे टेंशन और मान्यताएँ होती हैं। जैसे मैंने हाउस ऑफ सिंधियाज में सिंधिया फैमिली के बारे में लिखा है कि जो साल बहू के झगड़े वगैरह थे। जब इंदिरा गांधी की पैदाइश हुई तो वही बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि वहाँ जो थी इंदिरा गांधी की जो मतलब वो थी दादी जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी और उनकी बहन की तो घर में बेटा पैदा होगा। और उसके बाद में जब ये बेटी पैदा हुई तो आप सोचिए नेहरू के घर में मोतीलाल नेहरू बड़े मतलब उस जमाने के अंग्रेज, बहुत ही वेस्टर्नाइज उनका सिस्टम था, लेकिन वहाँ भी काफ़ी टेंशन रहा। हाँ, लोगों ने उसको अच्छे से वो दे दिया। उसके बाद उनको छोटी उनके घर में मुबारक अली नाम के एक वो थे, सर्वेंट कहना ठीक नहीं है, जो घर में लोग पहले रहते थे पुराने घरों में कि वो घर उनके ऊपर ही रहता था सारा। तो आनंद भवन में वो मुबारक अली साहब की फैमिली रहती थी, तो उनको जाके मोतीलाल नेहरू ने वो गोद में उनको दिया, देखिए हमारे घर में। तो वो जो थे उसको एक्नॉलेज तो कर लेंगे कि बेटा मुबारक हो और 100 साल जिए और आपका नाम रोशन करे, बार बार वो बेटे के रूप में उनका नाम लेते रहे, बेटी नहीं कहा। और फिर देखिए इंदिरा गांधी का उनका लाइफ ऐसी रही कि उनको जो अभी 20th सेंचुरी की जो ग्रेटेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड जो आए उसमें इंदिरा गांधी का नाम, मार्गरेट थैचर और बहुत सारे लीडर से सबसे ऊपर आया। तो जो उनकी बात जो उन्होंने कही थी कि 100 साल नाम रोशन करेगी वो तो हो गया, लेकिन जेंडर वो बहुत था। इंदिरा गांधी ने देखिए इमरजेंसी लगाई है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह था, लोगों को बहुत ज़्यादा उस लोग हर समाज के हर तबके को बहुत दिक्कत हुई है। उनको एक डिक्टेटर के भी रूप में माना जाता है, लेकिन उनका बड़ा एक सॉफ्ट साइड भी था। मैंने बहुत सी मतलब रिसर्च की है। दूसरी बात मैं एक और बता दूँ कि जो भी मैंने कोई भी किताबों में जो बातें लिखी है वो सारी तथ्यात्मक है, रेफरेंस बेस्ड है। आपको उसको पता चल जाएगा, ये कोई मैंने नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कह दिया या मेरी अपनी सोच थी, उसका एक बेसिस है। तो इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा गांधी का देखिए इतना उनमें सेंसिटिविटी थी कि वो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, जो 77 के बाद में इलेक्शन हार गई, तो एक बार कहीं जा रही थी तो कुछ उनको खाने को नहीं मिला, तो खाने में उन्होंने कहीं एक उसके उनके साथ कोई जाता था, एक बिस्किट का पैकेट था, पार्ले का बिस्किट का छोटा सा पैकेट, तो उसमें उन्होंने जो था बिस्किट खाने लगी, एकदम से उन्होंने जो था उसको ड्राइवर को उसके 2-3 बिस्किट दिए। फिर लगी देखो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये हमें ले जा रहा है गाड़ी के ड्राइवर, इसको भी एनर्जी की ज़रूरत है, ये भी भूखा है। और कहीं भी पब्लिक मीटिंग में जाती थी तो सबसे पहले वो वहाँ लोगों से कहती थी कि हमारे जो ड्राइवर है, ये पर्सनल स्टाफ है, इसको आप खाने पीने का अरेंजमेंट कराएं। तो शी वॉज वेरी अटेंटिव एंड वेरी केयरिंग पर्सन इन मेनी वेज। और उसको हम लोगों ने एक ऐसे हमारे एक इमेज आती थी कि शी वॉज वेरी स्टर्न और वेरी डोमिनेटिव। हो सकता है देखिए ह्यूमन लाइफ जो होती है वो इवॉल्व होती है। मेरी वाइफ यहाँ बैठी है फरा, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, I've learned a lot about this also, and then I saw that so every human personality goes through various phases. उसके उतार चढ़ाव के दूसरे। इंदिरा गांधी अच्छी थी, हाँ। इंदिरा गांधी खराब थी, वो भी कहा जा सकता है। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आए।
और उन phases में, but she was a very strong lady and she had a very deep interest, national interest. रशीद जी, आपने सोनिया गांधी पे बायोग्राफी लिखी है, and which was translated in 7 languages. Now, how is this biography different from any other biography written on Sonia Gandhi? And how did you manage to get that information about her life? Yeah, so I think writing a biography is a very difficult thing because you're saying how is it different, because it was the first book on Sonia Gandhi. It was published by Penguin publication. I wrote it in 2002, 2003 when she was out of power also. I was always very much interested by her presence because I was a political journalist. तो मैंने जो था, जब राजीव जी की बेदरवा हत्या हुई, उसके बाद में वो एक दो बार अमेठी गई थी, जो मैं काम करता था, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा उसकी कवरेज के लिए। तो मैं उनको देखता था करीब से। मैंने देखा कि वो उनको हमेशा उस समय वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन उनको पॉलिटिशियन से मिलने में कोई वो नहीं होता था। तो मुझे हमेशा से लगा कि उनको थोड़ा कुछ ना कुछ वो पॉलिटिकल लोगों से बात करती थी, गांव में छोटी छोटी जगहों के ऊपर। जब किताब लिखने का आया तो मैं उनसे मिला भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे बारे में कुछ भी मत लिखिए, आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि देखिए किताबें दो तरीके की लिखी जाती हैं, एक तो होता है कि ऑथराइज बायोग्राफी होती है और एक आप इंडिपेंडेंट अकाउंट लिखते हैं। तो इंडिपेंडेंट अकाउंट मैंने लिखा, खूब सारी मैंने रिसर्च की, कैम्ब्रिज भी गया। कैम्ब्रिज में बड़ा उनकी इंटरेस्टिंग बहुत सारे, आज भी अगर आप जाएँ तो बहुत से लोग उनको वहाँ पर जानते हैं। छोटे छोटे घर हैं जहाँ वो किराए के मकान में नहीं, राजीव गांधी भी वहीं रहते थे, पढ़ते थे, और कहीं वो आइसक्रीम बनाने का काम करती थी। इस तरह का जो वो लेबर का काम होता है वहाँ लोग करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले। सोनिया गांधी का मैंने वो भी वो करा कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, शी वॉज इन सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो वहाँ के ऊपर एक लेनॉक्स को स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था, वहाँ अंग्रेजी सीखने को गई थी और वो एक पढ़ा भी गई थी। और देखा वहाँ के ऊपर एक वर्स्टी नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ अभी भी है, जो वहाँ के ऊपर वो राजीव गांधी से पहली बार मिली थी। और राजीव गांधी को उनको पता नहीं था कि राजीव गांधी कौन है। और उसके बाद में बहुत टाइम जब उनकी एक तरीके से दे वर गोइंग अराउंड, फिर बाद में एक दिन पेपर में फोटो छपी थी इंदिरा गांधी की, तो उससे इंदिरा गांधी ब्रिटेन आई थी, मेरे ख्याल से 1965 की बात है, एज प्राइम मिनिस्टर। तब उनको पहली बार पता चला कि राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। तो बहुत सारी उनकी बातें मुझे पता चली इस तरीके से। वो भी उसमें भी लाइक सिंधिया शी वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, लेकिन कोई ऑब्जेक्शनल बात। बाद में उसमें फिल्म भी बनने वाली थी, और आप लोग जानते होंगे कि इटालियन एक्ट्रेस है मोनिका बेलुची, शी इज अ फ्रेंच नेशनल, शी वांटेड टू प्ले दैट रोल। उसका पूरा फिल्म राइट्स वगैरह भी ले लिए गए थे, बट सोनिया गांधी वाज वेरी मच अगेंस्ट दैट फिल्म प्रोजेक्ट। तो सरकोजी जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए, उसमें यूपीए की सरकार थी। तो शी मोनिका बेलुची came with him and she met her and she said I want to play your role। और तो वो लोग तो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बट आई थिंक there was some legal problem, legal notice etc was given, so the film could not be completed। Very interesting। रशीद जी, आपने एक और किताब लिखी है प्रधानमंत्री, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के 14 प्राइम मिनिस्टर्स का जो योगदान रहा है देश के लिए, उसके बारे में है। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपके हिसाब से वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए हमारे देश में मतलब 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक, और बहुत बार कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता, क्योंकि हर प्रधानमंत्री ने अपनी विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री रहे। किसी को बहुत मौका मिला, नेहरू 16-17 साल प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 11-12 साल प्रधानमंत्री रही, नरेंद्र मोदी जी 8 साल अभी प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले। तो हर और बहुत से कुछ लोगों को 3 महीने का मौका मिला। यंगस्टर्स आर आल्सो देयर, so there are some चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, उनको बहुत कम समय मिला। लेकिन सबकी देखिए मैं एक बात बताऊं, वो सारे लोग जो थे किसी को कम समय मिला, किसी को ज़्यादा, लेकिन वो देश के प्रति उनका बड़ा समर्पण की भावना थी, काम करना चाहते थे। कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं कर पाए, लेकिन उनकी नीयत पे मुझे लगता है, एकेडमिक सेंस में मैं कह रहा हूँ, हैविंग गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेपर्स एंड ऑल, वेदर इट्स अ मैटर ऑफ कश्मीर और एनीथिंग, नो मैटर व्हाट we may have a political view, but to say that somebody was bad or played against, so to say, the national interest, I
आई थिंक दिस लुक्स लिटिल अनफेयर। आपने अपने हिसाब से कोशिश करी, इंसान है तो उनसे गलतियाँ भी हुई, लेकिन कोई अच्छे बुरे का हम उनको वो नहीं कर सकते। तो मैंने इसीलिए पर्पज उसको हिंदी में किताब लिखी, मैंने ये जो रखी हुई है किताब भारत के प्रधानमंत्री, because there are a lot of books are there in English but in Hindi there is no such book। तो उनका सबका मैंने उस तरीके का लेखा जोखा और एक तरीके का मतलब किस्से कहानियों के स्टाइल में लिखा। छोटी सी बात बताता हूँ, एक प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल, आप लोगों ने कुछ लोगों ने नाम भी उनका सुना होगा। उनके बारे में बहुत कम समय के लिए लोगों को लगता था बड़े कमजोर आदमी थे। कमजोरी की बात, वो देश के विदेश मंत्री थे 70s में, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके साथ वो रशिया गए और उस वक्त यूएसएसआर था, यूएसएसआर के उस वक्त के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव, जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक भी किया था, पावरफुल आदमी थे। जब गुजराल साहब और इंदिरा गांधी उनसे बात कर रहे थे तो गुजराल को लगा कि बार बार वो उनकी घड़ी देख रहे हैं ब्रेजनेव। हमारी कंपनी है HMT, बड़ी मशहूर कंपनी है और पहले उसकी बहुत बड़ा नाम था, HMT की घड़ी पे उनकी नजर थी। इंदिरा गांधी ने उनको धीरे से हिंदी में बोला कि घड़ी मांगना दे दो। गुजराल साहब टस से बस नहीं हुए, एक बार कहा, दो बार ठीक है। उसके बाद में जब बाहर आए तो इंदिरा गांधी थोड़ी सी नाराज हुई, कहने लगी ये तुमने क्या करा इंद्र कुमार, वो घड़ी आपको बार बार देख रहे थे, पूछ रहे थे घड़ी कैसी, आप टारगेट दे देते। तो उसने कहा नो मैडम, आई एम अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई हैव माय डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। कि इंडिया का वो जो है फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ घड़ी उतार के दे, ये अच्छा नहीं लगता। बाद में उन्होंने HMT की 5 घड़ियों का एक बॉक्स में रख के उनको जाके प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर दिया। तो ये मैं बताती टेल्स यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। तो अब लोग उनको उस टाइम वो कर सकते थे, इंदिरा गांधी भी खुश हो जाती, प्रेसिडेंट भी खुश हो जाती, बट दिस इज द काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। चंद्रशेखर जी एक लीडर थे, हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उस जमाने में पंजाब में काफी टेंशन चल रहा था, 89 वो 91 की बात है। तो उसके बाद वहाँ के ऊपर एक लीडर थे, अभी वो फिर सांसद हो गए, IPS ऑफिसर थे, वो उन्होंने उनसे मिलने गए चंद्रशेखर से और उन्होंने कहा कि मैं तो अपना कृपान जो है साथ लेके जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ने मना किया तो वो लेकिन ले गए और बड़ी लंबी कृपान ले गए थे करीब। और उन्होंने क्या करा, जब प्रधानमंत्री के पास बैठे चंद्रशेखर के पास, तो वो कृपान निकाल के वहाँ रख दी। थोड़ी देर में चंद्रशेखर समझ गए, कहने लगे कि देखो ये उनका नाम था सिमरनजीत सिंह मान, अभी लोकसभा के सदस्य हो गए। उन्होंने कहा कि मान देखो, मैं तुम्हारी तलवार से नहीं डरूंगा, ये मत सोचो कि तुम कृपान से मुझे डरा सकते हो, मैं खुद ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, मेरे घर में आना, इससे बड़ी बड़ी तलवारें रखी हुई है। तो इस तरह का मतलब जो संवाद प्रधानमंत्री होकर के कर सकता था, वो चंद्रशेखर जी ने बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की थी, और उसमें कुछ लोग कामयाब हुए, कुछ में नहीं काम हुए। तो आपका जो प्रश्न पूछा था, मुझे लगता है कि आप अगर उस किताब को पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ईच प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री के तो बहुत सारे किस्से हैं। उन्होंने तो एक टाइम मतलब जब उस समय हमारे देश में आर्थिक संकट था, उन्होंने खाने का बोला कि बम्बई में एक बार उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि लोग एक टाइम का खाना छोड़ दें, तो बॉम्बे जैसी जगहों पे लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना सर्व करना बंद कर दिया एक टाइम का, और वीक में एक दिन लोग उपवास रखते थे और इस तरह से तो बहुत सारा मतलब एक इंसान का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, वो शास्त्री जी की लाइफ में दिखाती है। बिल्कुल। Talking about these political stalwarts, you have also written a book called 50 People Who Influenced Indian Politics. I think we have this book here. It's called The Leaders, Politicians, Citizens. It's about people who are no longer in this world, मतलब वो गुजर चुके हैं। This long list of 50 people also has some very interesting political figures like Chandraswamy and Phulan Devi. Right, so इनके बारे में कोई दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहेंगे आप? जी, इस किताब में तो बहुत सारे लोग हैं, APJ कलाम हैं, वाजपेयी जी हैं, शेख अब्दुल्ला है, शीला दीक्षित है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने कुछ और भी लोगों का ऐसा जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उनके बारे में मैंने जिक्र किया। चंद्रस्वामी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, राजस्थान के थे शायद, और वो जो थे वो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे। तो वो क्या हुआ कि उसी को जो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैंने तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत की है। तो उस ज़माने में वहाँ के इंग्लैंड के डिप्टी हाई कमिश्नर थे कुंवर नटवर सिंह जी। तो नटवर सिंह जी ने उनको मार्गरेट थैचर से मिलवाया, 1974 की बात है। थैचर उस समय प्रधानमंत्री नहीं बनी थी,
और लेकिन उनको बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने जो क्राउन में देखा होगा तो देखा होगा, शी वाज वेरी एम्बिशियस पॉलिटिशियन एंड एम्बिशियस प्राइम मिनिस्टर। तो शी वांटेड टू, तो उनको ये चंद्रस्वामी से, तो चंद्रस्वामी जी जब गए, देखिए वो कैसे लोगों को प्रभाव छोड़ते थे। उन्होंने कहा कि आप कोई भी 3 सवाल जो है लिख लीजिए पर्चे पे और मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो थेचर ने कुछ लिखा और वो नेटवर्क सिंह को दिया और इन्होंने फट से वो प्रश्न बिना पेपर देखे हुए बता दिया। थेचर को लगा ये कुछ तुक्का होगा। दूसरी बार जब उन्होंने पूछा, दूसरी बार भी कुछ और लिखा उन्होंने, फिर उन्होंने बता दिया एग्जैक्टली सेम थिंग। तीसरी बार में थेचर जो थी बिल्कुल मतलब एक तरीके से हिल गई, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए, आप आइएगा। अच्छा, आप जानते हैं ब्रिटिश सोसाइटी में बहुत मतलब क्लास कॉन्शियसनेस वगैरह रहती है और ये डिप्लोमेट थे नेटवर्क सिंह। तो नेटवर्क सिंह ने बताया कि वो बड़े कॉन्शियस हो रहे थे कि इसने चंद्रस्वामी ने कहा कि उनसे कहना कि रेड ड्रेस पहन के आना, लाल पोशाक पहन के आए। He said how I could tell the lady that to the British that time she was leader of opposition to wear red and come to my house on Tuesday. But Thatcher agreed on all these things. So when they met again, Margaret Thatcher and Chandraswamy indicated a particular figure that this number of seats you will get. Okay, and that's exactly the number of seats she got after election. So this is one of the, I don't know, I have no scientific explanation to the kind of power he had. Now we can say that, you know, people say he was a god man, he was a fraud, scamster, all kind of things. But I have tried to show this, that, you know, why, what was the reason? What was that you know, Sultan of Brunei, Adnan Khashoggi, so many big people were, and so many Hollywood stars were attracted to him. So there was something about Chandraswamy. Right, and what about Phulan Devi? Unka koi bhi samajh aaye? Phulan was very interesting, very simple. I mean, you know, I met her when she was a member of parliament from Samajwadi Party. I could never, you know, imagine that she was a kind of this kind of thing, a mass killer or a dacoit or so. Very simple life. So once there was somebody who was making a film on Phulan Devi. So she went to France. अब फ्रांस में उसने जो डायरेक्टर था, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, उसने उनके लिए लेमोजीन जो थी पूरी वो थी, और फूलन देवी जो थी पेरिस में जा रही थी। एकदम से उनको देखा कि सड़क के ऊपर कोई वो बेच रहा है, जिसे हम कहते हैं मस्क मेलन, ये जो खरबूजा। So she said, "Roko, roko, roko." Again, she was not well versed with English or French, of course. So the French driver stopped. She got off and she bought that मस्क मेलन और खरबूजा जो था उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब वहाँ उसका पानी वानी नीचे गिरने लग गया। So that French driver got very offended. उसने कहा, "No, no, this is not allowed." "No, no, you don't know my past." Threatened him. And she had that her this. So there was some very kind of childlike things there about her. Very interesting stories are there about her. रशीद जी, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आपका कोई व्यू पॉइंट बताइए। अब देखिए, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। I'm sorry, this is a pessimistic thing and all, but I think you know, the Indian politics is very difficult. I would say it's very difficult to attract so many people when the story is always going to be glass is half full or half empty. I mean, you go around, you see, I mean, I'm from Udaipur for the first time, I can see, oh, it is so cold, it is so developed, all of it is true. But, you know, somebody can give you a complete different story, opposite story, say that about India, everything what you say, the opposite is equally true. So this is what is happening in our country. So what we are doing is, we are going at a, I mean, we are seeing this in political parties and politicians, they are going at a very, you know, narrow level. They are trying to instigate, they are trying to ignite all kind of thoughts and ideas. And because there is a desperation, it's not a normal thing. And one more thing I want to tell you, which is very away from political this thing, is that we have adopted a British parliamentary system, Westminster model of parliamentary. वहाँ पर क्या होता है कि propriety is very important, as most of us know that British, you know, they don't have a written constitution. तो उनके यहाँ मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। Issues of propriety are far more important than the issues of legality. हमारे यहाँ मर्यादा का बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका कोई स्थान नहीं है पब्लिक में। लालू यादव had very famously said कि हमने फुटबॉल ग्राउंड देखा, हॉकी ग्राउंड देखा, पोलो ग्राउंड देखा, ये मॉडल ग्राउंड क्या होता है?
So we have defections, we are not sensitive about people making promises and not keeping it, all kind of things. So therefore I mean I'm not very optimistic, but the way people queue up and vote for elections, you see in Bengal vote percentage was 84, in Tripura 89%, everywhere. So people come with it. So that is something I think keeps on going. Talking about elections, Rasheed ji, you also written a book called Ballot, which talks about elections in India after independence. So how do you think social media is going to impact elections of future? I think social media is affecting our politics in a very big way, because there are it's a lot of contradiction. And you can say whatever we say about India equally true. We have, on one hand, we have lot of social media, Instagram, Facebook, Twitter, and all politicians, political parties are there, and they are hugely influenced by it. There is a lot of technology that comes in play, a complex system, but even the American elections and our elections supposedly are influenced by the big technology and how it is used. There are a lot of charges are there against Facebook and several other platforms worldwide. That is one thing. But you also see, remember that we are having, people are doing yatras, which is a very old and ancient, a very simple way of doing. I mean, when people wanted to have a mass contact. So I think somewhere we are very unsure of our, roots. So people are not, we went for technology in a very big way, but somewhere we realize, and it's not, I'm not just talking about Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, several people are doing, Yatra, the Prashant Kishore is doing it in Bihar, and several other people are doing it. So somewhere we are, experimenting. We are not so sure, because what has happened that actually social media has taken us in a very artificial zone. It's away from reality. And I think political parties and politicians are realizing that. So they are just trying to come back to the ground. Rasheed ji, what is the next, who's the next person or subject that you are working on? What is your next book going to be on? I think there are several things that interest me, and that is I want to do a project about this political life of Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan. They want to be, their 50 years of their wedding is there, I mean of their marriage. They both have been in politics for a long time. Though Amitabh Bachchan was, as many of you know, he fought elections and went out, but he has always remained very kind of politically alive in his life and thing. I think it's a very fabulous story. I have written one of the books. I have written a tale of friendship. What happened with him and Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi's family. Because they were very close. There's something very interesting things are there. So that is one project I'm trying to work, because these are the people, big people. You have to be very sure of this, that whether there will be any defamation or libelous kind of thing. One has to be very careful about these kind of things. Then there was a thing called a Nagarwala affair that had happened in 1971. From State Bank of India, New Delhi, someone mimicked Indira Gandhi's voice and siphoned off 60 lakh rupees. So it was a big, people have forgot about it, but I have a lot of details. So hopefully by May next year that book will be out. It's called. Look forward to having you again maybe next year then to discuss that book. So we now invite the beautiful audience to ask questions and interact with the author. सर आप भारत जोड़ो यात्रा को किस रूप में देखते हैं? राहुल गांधी जी निकले हैं, आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ भाजपा की रैली है, जन आक्रोश रैली, राहुल गांधी निकले हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। जी, देखिए क्या होता है जब हम कहते हैं भारत जोड़ो, तो अब इसका एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ है। इसको आप जैसे चुनाव में आदमी कोई राजनीतिक दल लड़ता है, उसको 100 में से 50 सीटें मिली, 20 सीटें मिली, 10 मिली, 80 मिली, 90 मिली, जो भी है उसको आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं। यात्रा को आप एक क्वान्टिफाई नहीं करते। यात्रा तो एब्स्ट्रैक्ट है। कोई आदमी कह सकता है भारत तो जुड़ा हुआ है, उसको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी ये कह सकता है कि जिस तरीके से धर्म और जाति और दुनिया भर की इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर उसमें हम बटे हुए हैं, वही बात सही है।
उसको जोड़ने की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली जो जैसा मैंने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें हार और जीत की होती है। हमारे यहाँ समझना ये चाहिए फर्स्ट पास द पोस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जिसको पहली जो रेस पार कर जाए और उसको जो सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो अभी जैसे भाजपा को 31% वोट मिले हुए हैं, फिर 38% वोट हुए। सिर्फ एक समय में जब राजीव गांधी की इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 इलेक्शन, तब देश ने मतलब 51% वोट मिले थे। बाकी तमाम जितनी सरकारें आई हैं उनमें से कभी भी किसी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिला है। तो अब somebody can say 50% people are against you, but that's a loser's argument, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव पद्धति है कि हमें अगर 26% वोट मिले और बाकी किसी को 23% मिले, 22% मिले, 21% मिले और बाकी जो 100 के बचे हुए हैं वो बढ़ जाए, लेकिन जो 26% वाला है वही जीता वो माना जाएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू के साथ भी था, मोदी जी के साथ भी है। तो ये सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि यात्रा कामयाब होगी या नाकामयाब, ये सब इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या राजस्थान में चुनाव जीत सकती है या देश में जो अगले चुनाव होंगे उसमें होंगे, ये इस पर निर्भर करेगा। Sir, you commented on the Nagarwala case. Are you going to touch upon this in your forthcoming book? Yeah, the whole book is called Nagarwala Affair because I think that you would know that the entire young generation doesn't know what has actually happened. There was a commission of inquiry also. तो उसके बाद नागरवाला की डेथ हो गई तिहाड़ जेल के अंदर। It's very interesting case. Oh, or was he shot dead, sir? I am from the military, so No. It was. I mean, he was in Tihar jail when he died, and there was a proper postmortem was there, and I mean, ultimately all deaths are heart failure. And then there was the Justice Jagan Mohan Reddy Commission was there, which was set up by Morarji Desai government. That report, Justice Jagan Mohan Reddy gave a clean sheet to Indira Gandhi and Sanjay Gandhi. Though all kind of things were said about that it was Sanjay had taken money. Again, I had to be, on the writing of that book, I had to tread very cautiously because it's very tempting to say that Indira Gandhi or her son was guilty or not guilty. But I have left it to the reader to decide. So you can't really be that explicit in your book. No, it's As not I said, that to perceive it, it's quite a controversial affair. Precisely. Controversial, yes sir, but at the same time, it becomes, look, if a commission of inquiry is saying that, nothing was conclusively proved, then, for a journalist after 50 years to say that this was the case is very difficult. Then there was an entire police trial was there, police case was there. So I am saying I have gone through all the documents and I have presented those documents also. Again, not for or against, it's just for the readers to make up the mind. I don't know, sir, if my perception is correct, but it had something to do with the earliest form of RAW. I happen to have met the family of Santrampur in Gujarat, and the lady's father, he happened to have been then the boss of RAW. So I did get some other inputs on that Nagarwala. There were all kind of things were there, like it was a CIA operation or RAW thing had gone bad, or all kind of. So I have mentioned this whole chapter on the conspiracies that are there, and I have tried to. Let's hope so, as conclusively as you can for us. Thank you. Rasheed ji, that was a very interesting take on all your books. आप जब कोई किसी की बायोग्राफी लिखने के लिए सोचते हैं तो what are the points which make you decide कि लिखो इसकी बायोग्राफी? देखिए एक तो जो public, yes, that's a very interesting question, valid question. I think it should be that person उसकी क्या public मतलब what is the readership interest in it, because whether people want to read about that person or not. There are two types of people I have seen. There are people who are very well known and the people who ought to be written. जैसे हमारे यहाँ बहुत से unsung heroes और heroines हैं, चाहे वो freedom struggle रहा हो या उसके बाद का. Each person has a life and a history which needs to be told, narrated. But obviously every person cannot have a biography. I think public figures need to be written about so that we know who they are, what they have done or not done. So that in democracy actually we should have informed choice. हम कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदते हैं मैम, हम इतनी रिसर्च करते हैं उसका पूरी की वॉशिंग मशीन की ये मशीन ये जो होती है ना वो क्या होता है, टॉप लोडिंग है तो उसके क्या फायदे हैं, फ्रंट लोडिंग है तो क्या फायदा है, इसमें हम बड़े मतलब कैजुअल होते हैं
हम जाके उसे वोट दे देते, हम उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं करते। अब अगर I'm not talking about you, I'm talking about voting also, but there are a lot of people, I think about 30-40% people are there who have no ideology or a political affiliation or so. I think they just go and it's like a 15-minute thing for them. So if you read and if you get to know about your public figures, perhaps you will be better equipped to make a decision, take a call. और जिन लोगों के बारे में आपने लिखा है अभी तक, जी जी, पर्सनालिटीज, what is one figure जो you found a negative aspect which you never, a dark side of that person which you never expected? I think so. Look, I said I don't judge people in such a harsh manner. I think every person has some purpose or some intention. They just succeed. Like I'm telling you example of Phulan Devi. If you read about Phulan Devi and the kind of circumstances, etc., at times you may have some element of sympathy for her, but this obviously cannot be justified of her criminal act and violence and killings and all that she did. These are very difficult choice. I think all of us, there is a huge shade of grey in every personality. Dark side is I'm sorry to say, but it's a very strong word to use. But yes, human personalities are very interesting, and there is a dark side. I'm not denying of that fact. सर, अभी जर्नलिज्म को कहाँ देखते हैं? मतलब as we all know, it is considered as a dark phase for the journalism. Where जैसे अभी आपने भी बोला तो even जवाहरलाल नेहरू and इंदिरा गांधी, but out of your mouth it came Modi ji. So it's funny. She is part of our culture. It's just like that, but it is how you are looking at journalism, where it seems that वो कई जगह वकील और जज बन जाते हैं rather than being a journalist. Yes, I think you are partially right in the sense that journalism is going through a lot of difficulty and challenges. There are some technology-driven challenges are there. Some are I would say financial in nature in terms of ownership and control, because that also plays a very important role. And when we say about journalism, actually we look at generally about television or mainstream media. There are various layers are there. There is a lot of online publications and online portals are there. What you know as digital media. There's television media, there is print media, and all of them have their challenges. But I think more importantly, and those journalist friends of mine would go here. Actually, problem is coming is about credibility. क्योंकि क्या हुआ है, जो आपने सोशल मीडिया के बारे में, आज सबके पास में मोबाइल फोन है और इंटरनेट है, डेटा है, so they have their version. तो उसको, and people don't know, people want to believe what they want to believe. Please don't think media is a change agent. I mean, since I have a degree in media, so I'm just saying this. Media actually perpetuates the existing belief system. जो हम देखना, सुनना, समझना चाहते हैं, कॉम्प्लेन करना चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते। आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, ज्यादातर लोग जो है ना, मतलब हम दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं, हम कभी कन्विंस नहीं होते, मतलब इट हैपेंस वेरी रेयर। सो दिस इज व्हाट, सो अब सबके पास पे जब एक्सेस है और नॉलेज है और सोर्स है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हम लोगों ने मतलब जर्नलिज्म किया था, हमें ये होता था कि हम उसकी जड़ तक जाए और कोशिश ये करें कि जहाँ तक हो सके, जो अनविटिंग बायस सब में होता है, नॉट डिनाइंग दैट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, मैटर ऑफ डेट, लेकिन हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रहें, न्यूट्रल रहें, पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करें। मैंने इसमें शेख अब्दुल्ला का एक प्रोफाइल लिखा हुआ है। शेख अब्दुल्ला की बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ख़राब लगेंगी, तो वो वाली बात होती है। अब आप कहें क्या शेख अब्दुल्ला अच्छे आदमी थे? हाँ। क्या शेख अब्दुल्ला भारत के लिए गलत थे? हाँ, वो भी कहा जा सकता है। तो एक कॉन्क्लूसिवली पूछना, जब आपके पास इन्फॉर्म चॉइस हो, वो बहुत मुश्किल होती है। और आज जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, उसमें लोग बहुत जल्दी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच रहे हैं। 18 साल का लड़का, 22 साल के बच्चे, सब लोग दे आर वेरी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट दे बिलीव और व्हाट दे थिंक और व्हाट दे डू। सो अब मीडिया क्या है, मीडिया भी उसमें दो उसमें बन गया है, क्योंकि
जो उसकी प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर जो है, टीआरपी का कहिए या लीडरशिप का कहिए, उसने बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रखा है मीडिया को। तो हम फॉर और अगेंस्ट हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतती हैं, हारती हैं, उनकी अपनी उनका मैथमेटिक्स पर इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन मीडिया की जो है वो उनका जो भरोसा या वो चला जा रहा है। आज हम देखते हैं कि एक पक्ष है जो रवीश कुमार को देखने में या उसको करके कंफर्ट महसूस करता है, दूसरा है जो हमारे मित्र अर्नब गोस्वामी के साथ में बड़ा आइडेंटिफाई करता है। तो वो उसमें ना आदमी फंसा हुआ है। The media was not supposed to create these characters of, I mean, since I know both of themselves, I'm taking liberty of naming them. आपको मुझे लगता है कि दोनों की एक अपनी कॉन्सिक्वेंसी है, जैसे कांग्रेस और भाजपा, जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। आप उसी को जानना चाहेंगे कि आगे आपको क्या लगता है कि देखिए आगे जो अभी है वो और ज्यादा बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि कोई राम राज्य वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर अभी आपका एक आर्टिकल था कांग्रेस बैक टू पावर, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इवन आई एम द पार्ट ऑफ इट, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द मीडिया आई एम एट on the side of one party. Okay. So when I saw this before coming here, obviously I read about you. So it had a tagline that Congress back to power about the Himachal elections. So sir, यानी मैं भी ये जानना चाहूँगी, maybe I don't want to be the victim of that media and focus on one side and. Yeah, so this was in the context of that article you are writing. It was published in the Tribune, which comes out from Punjab. It was about the context that the people, like recently there was election. There was election in Gujarat, and there was election in Delhi, and there was election in Himachal. Now the voter actually behaved. I mean, I had written that the Santa Claus had come early, so voter gave something for everyone. Of course, in Gujarat, the BJP and Prime Minister Modi, he got in a way that was more than that expectation. And in Delhi, of course, there was a very intense election where the BJP's vote percentage remained the same, but the opponent, the Aam Aadmi Party, got more. And in Himachal, which was a very tough election for the Congress, but because they had some resources at the ground, unlike Gujarat, where Congress, the ground level was not there or was very weak or so, they had issues, they had people, they had campaign, they had micromanage, so they won. So I was saying that there are going to be 13 more elections before Lok Sabha elections. So if the Congress is serious about its intention to stand up, and I've given a lot of examples of Rajasthan also. I don't want to talk here from a political position. So it's this: if in Rajasthan Congress, if people are divided, then obviously their strength will be half. And then whatever happens, so maybe Rajasthan will go Gujarat way next time whenever elections are held. Something like that. Rasheed sir, एक छोटा सा सवाल. I have about 30 years of service in J&K. It's not always with the bullet. I have operated with special forces also. So we go for the hearts and minds, winning the hearts and minds of the people. Abdullah family is being marginalized to a great extent. Yes, sir. ये जो abrogation हुआ 370 का और जो भी प्रतिक्रिया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने की, आपकी इस पे कोई राय है? क्या ये सही राय जो हर सिटीजन की एक राय होती है, तो वो राय तो बिल्कुल रहेगी। देखिए हमेशा लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी सरकार कदम उठाती है उससे लॉ एंड ऑर्डर इज वन एस्पेक्ट, बट द डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग शुड आल्सो टेक प्लेस। तो उसके लिए वी हैव टू वेट एंड वॉच व्हेनेवर इलेक्शंस आर हेल्ड। आई थिंक इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट 6 months टाइम और सो। अभी ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन हुए हैं, सिविक लेवल पे, लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, तो हमें पता चलेगा कि क्या उसका वहाँ के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है और आगे का काम क्या हुआ। लेकिन जहाँ तक 370 was a tool, it was a tool for something and a tool for something else now. Ultimately, if it leads to greater integration with, so to say, mainland India with issues and all that, it's more than welcoming. Do you think, sir, इसका कोई और follow up होने वाला है? No, like we are talking about this, we are getting a little aggressive about Pakistan's position on Balochistan and so on. So do you foresee
that this might magnify in some ways? No, I don't think so. I think as long as a kind of democratic process takes place there, elections are held, the government is there, I think things are going to be much better, because I've been to Kashmir, I mean as a civilian, as a tourist, as a just a couple of times, I see there is a big change in that. You know, many a time we just keep going in that, look at the Cold War era. There was a sort of Russian bloc, and in our lifetime we saw it just evaporated. And the kind of films that were made and the kind of build-up and the literature and all was there. So similarly, I think in our country also a lot of problems are getting resolved. I mean, I've written a chapter on Laldinga, who had said that it is it's a curse to be a Mizo in this country. Today, Mizoram is one of the most peaceful states in the country. I have seen what happened what was happening in Punjab. I mean, look at today's Punjab. Though there are other problems are there now, but that kind of militancy of separatism is not there. So things are, I think, changing fast. I think that we as a country have integrated far more quickly than what it was. Like you look at Hindi in Tamil Nadu. I mean, I went to Kalam program also there, and there was so much interest about Hindi. So a lot of things are happening. Good things are happening. So we'll take last two questions. सर हर एक इंसान काम करता है, उसका रिटायरमेंट होता है, ठीक है. आज नेता हैं, वो उनका कोई रिटायरमेंट का वो नहीं होगा. आज आप देख लीजिए, हर नेता बोलेगा उसकी ज़रूरत लड़खड़ाती भी होगी. तो क्यों ना इनके लिए एक निर्धारित होनी चाहिए ताकि युवाओं को मौका मिले और युवा आगे बढ़े. हाँ, देखिए आपका सैद्धांतिक रूप से प्रश्न बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, लेकिन देखिए अल्टीमेटली फिर वही आता है, लोकतंत्र की एक लिमिटेशन है. लोग वोट दे रहे हैं, 70 वालों को दे रहे हैं, 80 वालों को दे रहे हैं, 85 वालों को दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो जीत रहे हैं. तो आप किसी को डिनाई कैसे कर सकते हैं? देखिए बड़ा बारीक मामला होता है. मैं आपको एक दिलचस्प कंट्रोवर्शियल बात है, सॉरी बट हम सब वंशवाद के बहुत खिलाफ हैं. डायनेस्टिक कल्चर इज वेरी बैड एंड इट हैज नो प्लेस इन डेमोक्रेसी एंड ऑल. बट आई टेल यू, इफ इट सिंस आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, अगर वंशवाद नहीं होता तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बहुत कम होता. ये राजमाता सिंधिया, जो यशोधरा राजे, वसुंधरा राजे, इस कहीं ना कहीं डायनेस्टी से महिलाओं को देखिए पार्टिसिपेशन तो बहुत कम है, 20% से भी कम है, और उसमें से भी जितने 80% उनमें से डायनेस्ट है. तो एक स्तर पे आप कह सकते हैं गलत है, वंशवाद गलत है, लेकिन दूसरे स्तर पे आप देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल ही नहीं होता. मुस्लिम महिलाओं के, अभी मैंने किसी किताब लिखी थी, पब्लिक फिगर, आपको पता है 51 में पहला इलेक्शन हुआ और अब तक करीब 9000 लोकसभा के सदस्य हो चुके हैं. मुस्लिम महिलाओं की संख्या कितनी है? 20 है. So which is 0.5% or much less than that. So उसमें भी आप देखिएगा तो उसमें से 50-60% वंशवाद की निकलेगी. अगर वो वंशवाद नहीं होता तो वो भी नहीं आ पाते. तो these are, see I'm saying, it's very difficult to say yes or no. I'm sorry it will be disappointing, but this is a real problem. क्योंकि आप लोकसभा में देख लीजिए सर, 30 की उम्र, 30 ही होंगे ऐसे सांसद जो इस उम्र के होंगे, बाकी तो सब अपनी जुबान से लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे. लेकिन देखिए आपको एक और बात बताऊंगा, इसी मैं आपसे वो नहीं कहता आप यंग हैं. देखिए देश में जब गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में आए साउथ अफ्रीका, वो 50 पार थे. जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई और उसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ वो जयप्रकाश नारायण ने किया, जो कि 70 साल से ऊपर के थे. जो अभी 2011-12 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो गलत सही कुछ अलग बात है, और नशा हजारे लोग घूमट, तो ये काफी सारी संकट के टाइम के ऊपर वो आया. तो इसको आप एज से मत आती. आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर. एवरीवन विल ग्रो ओल्ड as long as people find acceptability. May I ask one last question? Yeah, please. I would not. कभी आपने गौर नहीं किया ये big bull, हर्षद मेहता and all this bank scams what has happened, नीरव मोदी, मालिया, उसके ऊपर कभी कुछ लिखने का? नहीं, वो जो नागर वाला किताब है वो मतलब फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के नाम से वो कर रहा हूँ. देखिए सारे ये पब्लिक डोमेन में है. हमारी, आई एम सॉरी टू से अगेन, हमारा देश जो है वो मतलब इस सब मामलों में बहुत उदासीन है. आउटरीच नहीं होता. मैंने खुद देखा है सुखराम, जब वो उनके घर में इतना पैसा मिला था 98, वो जो ह्यूज आउटरीच, उसके बाद सुखराम जी सब चुनाव जीत गए. जयललिता कितनी बार चुनाव जीती. आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. See why is it so? I'll give you answer. And nobody, I have said it in so many public forums, but nobody wants to take heed to it. हमारे यहाँ क्या है, इलेक्शन में हम कहते हैं कि
असेंबली में अब तो बढ़ गया है, पहले 25 लाख था, अब करीब 45-50 लाख रुपए खर्च कर सकता है आदमी। लोकसभा के लिए वो 75 लाख रुपए सीलिंग है। हम सब जानते हैं कि वो 75 लाख से वो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा खर्च होता है, सबको पता है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे अच्छा बुरा जो भी होता है, मतलब, और वो पूरा का पूरा वही चल रहा है। तो जब एक पूरा करप्ट सिस्टम है कि जब 542 जो लोकसभा मेंबर आते हैं या असेंबली में यहाँ के ऊपर मान लीजिए 200 विधानसभा के सदस्य आ रहे हैं, वो सब एक तरीके से किसी न किसी गलत काम करके आ रहे हैं, मतलब पैसा मोबिलाइजेशन करेक्शन। आप उनसे ईमानदारी की उम्मीद कैसे करते हैं? We are, sitting over a very corrupt system, and it's nothing to do with Congress, BJP. Everyone is equally guilty and guilty for. तो हमारे यहाँ ये नहीं कि हम कहते हैं कि साहब सीलिंग 10 करोड़ की है, जैसे MPs का 10 बार मैंने कहा कि भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आप सैलरी कर दीजिए 1 करोड़ रुपया, लेकिन वो खर्चा सब दे अपना घर का, जैसे हम लोग लेते हैं, रेंट लेते हैं 15,000 से लेके मतलब 25 लाख तक का रेंट हो सकता है दिल्ली में। आप रेंट पे करिए, देखिएगा वो सब बंगले छोड़ के तो 2-2 कमरे के फ्लैट में चले जाएंगे। बट वी डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज वी वांट टू। आपको पता है 50% से ज्यादा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टैक्स पेयर्स नहीं है, और यहाँ के ऊपर किसी को भी बेचारा वो जो गवर्नमेंट में जो 4th क्लास एम्प्लॉय होता है आजकल वो टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। ये जो सिस्टम है, हमने देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, हमने सोशल रिफॉर्म नहीं किया, हमने लीगल रिफॉर्म नहीं किया, वही ना थोड़ा है, बहुत कुछ की जरूरत है। Any more questions? No. So I have a question. So you've written a book on actors and obviously politicians. So what do you think? Indian movies are more interesting or Indian politics? I think movie, cricket, and this thing, it's all very much interlinked are there. So I think nothing to read movies if you ask me. Good evening, everyone. On behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas Udaipur, I thank Mr. Rasheed Kidwai for being with us and share his honest anecdotes and experiences. It was enjoyable to hear all the interesting stories. It was an honor to have you, sir, among us. I thank our presenter, Shri Cement. I sincerely thank our media friends for helping us spread the word about value of literature and art. And most importantly, I thank all of you, our dear patrons, for joining and participating in this session. I'd like to call upon Ms. Swati to felicitate Mr. Kidwai. Yeah. With immense gratitude, we sign off and see you all next year with another stirring session. Best wishes and a warm winters. I request Ehsaas women to come for a picture. Thank you very much, and it was a great pleasure. Also that our guest author will also be signing the books, so please take your copy and have it signed personally from him. Thank you.